to the lecture series of electrical measurements and measuring instruments. So in today's session we are going to see more devices which are used to measure the pressure. Okay, so one of the most popular devices in the pressure measurement, that is Bourdon tube, and that we are going to see in this video lecture. So here you can see that Bourdon tube is the one of the best device that is used to pressure measurement, for the pressure measurement, and other devices that are bellows, diaphragm and capsule. So Bourdon tube is classified into the four parts. First is C-shaped, spiral and helical and twisted. So as whatever you are seeing in this figure, that is my C-shaped Bourdon tube. Okay. So generally C-shaped Bourdon tube जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, and the pressure range that it can measure, that is of 10 psi to 1 lakh psi. ओके, इतनी रेंज तक की जो है ये सी शेप्ड Bourdon ट्यूब जो है वो मेजर कर सकती है. When pressure is applied at A, यहाँ पे अगर आप कोई प्रेशर यहाँ पे दे रहे हो, then tip B, this pointer will deflect on this scale. ओके, ये स्केल के ऊपर ये कुछ डिफ्लेक्शन हमें देगा. तो that is the main concept of this pressure measurement. There is an arrangement for converting this linear displacement into a circular one. यहाँ पे आप देख सकते हो that is my pressure. ओके, ये प्रेशर जो है ये जहाँ यहाँ पे lateral movement, linear movement में है. ठीक है, तो linear movement में हो रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि it is converted into the some angular movement. ठीक है, यहाँ पे ये कुछ angular move कर रहा है कुछ एंगल पे, with the help of this geared sector and pinion and with this link it is moving. यहाँ पे ये gears है जो आप यहाँ देख रहे हो. This circular motion is called as the gear, and this pinion is also a geared sector. Okay, तो ये जो है वो इस तरीके से हमें डिफ्लेक्शन देगा with the help of this pinions and gears. Okay, तो ये मेरा जो Bourdon ट्यूब है, ये Bourdon ट्यूब है जो प्रेशर को सेंस कर रहा है. ठीक है, सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दी सी शेप्ड ट्यूब द एंगुलर डिफ्लेक्शन इज नॉर्मली मेजर्ड विथ अ मैकेनिकल पॉइंटर मूविंग ओवर अ कैलिब्रेटेड स्केल. ये स्केल जो है वो कैलिब्रेट किया हुआ है, उसके ऊपर मूव कर रहा है. Bourdon tube are fabricated with metal alloys such as brass, phosphor bronze, beryllium copper, stainless steel and nickel alloys. ये जो मैंने नाम दिए हैं, these are the metals which can be used to measure the pressure and used into the construction of the Bourdon tube. Okay, I must say. So Bourdon tube elements have several distinct advantages, and this include low cost, simple construction, high sensitivity, good repeatability, high pressure range and high accuracy at low pressure. Okay, ये जो है वो लो प्रेशर के ऊपर इतनी सारी क्वालिटीज हमें देता है. हाई सेंसिबल है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट भी काफ़ी कम है, गुड रिपीटेबिलिटी, मतलब एक ही रीडिंग को बार बार it can repeat. Okay, and the high pressure range, that is the very good advantage of this C-shaped Bourdon tube. High accuracy but at also the low pressure. ठीक है, लो प्रेशर के ऊपर भी ये very high accuracy provide करता है. Their greatest advantage is that they are easily adapted for designs for obtaining electrical outputs. ठीक है, इनको आप इलेक्ट्रिकल आउटपुट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो एंड कैन बी यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर कन्वर्जन. ओके,
So that is the complete idea behind this C-shaped Bourdon tube. ठीक है, तो ये Bourdon tube की जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे देखी है. Then after the second type, that is the spiral pressure range. इसकी क्या है प्रेशर रेंज? तो देखो, प्रेशर रेंज इज बिलो दी 1000 psi. ओके, अभी इसे स्पाइरल क्यों बोला गया है? दैट इज दी ड्यू टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर Bourdon tube. ओके, तो इन दिस केस सॉकेट प्रेशर कनेक्शन इज प्रोवाइडेड एट सेंटर. यहाँ पे प्रीवियसली क्या था? It was connected over here at the tip of the end. This socket connection is connected over here, but it is connected with the particular this pinion structure. Okay, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली क्या किया गया है? It is exactly located at the center. सेंटर पे लोकेटेड है. फ्री एंड इज वाउंड सेवरल टाइम्स. ठीक है, इसको थोड़े चक्कर मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उनमें कन्वर्ट किया गया है. एंड अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगल. जो भी ये मूव करेगा, जितना भी मूव करेगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एंगल. मतलब जो भी एंगल हमारा बन रहा है दैट कैन बी डिफ्लेक्टेड विद दिस पॉइंटर. ओके, for given pressure more deflection of the tip is obtained, thus it is quite sensitive. ठीक है, आप कोई भी deflection of the tip जो यहाँ पे देख रहे हो, it can be obtained. ठीक है, quite sensitive है. बहुत ही slowest pressure अगर यहाँ पे ये section के अंदर यहाँ पे pressure में आप देते हो, then it is also able to supply that range. Okay, so that's how this spiral type Bourdon tube can be worked. Next, that is my helical type Bourdon tube. Helical type Bourdon tube का जो structure है, it is somewhat like helical ways. Okay, DNA जो हमारा रहता है, that is the helical construction of the DNA, and same construction is used in this particular helical type Bourdon tube. So over here the pressure range is also the same as that of in the spiral. Okay, below the 1000 psi. It is its advantage is that mean diameter of turns can be kept fairly constant over a wide range of pressure. Okay, बहुत ही लंबी रेंज के लिए अगर आप मेजर कर रहे हो, then the mean diameter can be possibly maintained. Okay, कितने भी प्रेशर तक आप जाओ, the diameter will be always constant of this particular helical structure. Otherwise it is sensing the twisting force on it, so it is hard to keep that particular diameter onto this any pressure range. Okay, this means that a large instrument case is not necessary. Helical elements are therefore frequently used when multiple recordings on the same chart are required. एक ही चीज के ऊपर आप बहुत सारे अगर रीडिंग्स लेना चाहते हो, then it is very much suitable for the take out the readings. So that is the complete introduction about the helical type Bourdon tube. The next, that is my twisted Bourdon tube. Okay, that is the fourth type. Pardon me for over here, this is fourth type, twisted type. Pressure range is same as that of 1000 below 1000 psi. Okay, below 1000 psi तक ये जो है वो measure कर सकता है, and its construction will be like this way. The twisted tube shown has a crossed wire. यहाँ पे आप देख सकते हो एक crossed wire है. Stabilizing device which is stiff in all radial direction but soft in rotation. This reduces output motion due to shock and vibration. Shock और vibration को ये जो है वो withstand कर सकता है, and it can be easily stabilized at a some particular
पॉइंट, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस केस. Bourdon tubes are useful for static or slowly varying pressure measurements over a wide range. It is also used in liquid gas filled thermal system for measuring temperature. By connecting free end of Bourdon tube to LVDT, an output electrical signal proportional to input pressure can be obtained. Okay, so ultimately जो यहाँ पे हो रहा है, द LVDT में जो चीज़ थी वही सेम चीज़ है यहाँ पे हो रही है. एन आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द इनपुट प्रेशर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, दोनों एक साथ एक दूसरे को प्रोपोर्शनल में, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा. सो दैट इज द कंप्लीट आइडिया बिहाइंड दिस Bourdon tubes. So I hope all of you have gained some of the knowledge from this video about the Bourdon tube, and if you have understood well, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.